me every time. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब लोग। FHL प्लैनेट के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। FHL प्लैनेट की तरफ से पाकिस्तान में तालीम सब के लिए के नारे के ऊपर हम लोगों ने जनरल नॉलेज की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसके सिलसिले में आज हम आपके सामने कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें पाकिस्तान के अंदर तालीम को आम करने का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर नॉलेज सीरीज में आज ये हमारा सेशन नंबर 1 है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि हर वीडियो के आखिर पर आपसे एक सवाल किया जाएगा और उस सवाल के जवाब को आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी देना है। इसके साथ साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखकर उसके बारे में अपनी कीमती आरा का जो शुमार है वो भी कमेंट्स में कीजिएगा, ताकि हम लोग जान सकें कि हम लोग किस हद तक काम अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पे हमारी डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर? द आंसर इज चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर 2, who is the owner of Microsoft Computer Company? The answer is Bill Gates. Question number 3, what is the abbreviation of USB? The answer is Universal Serial Bus. Question number 4, which is the oldest search engine? The answer is AliWeb. Question number 5, who was the founder of World Wide Web? WWW. The answer is Tim Berners-Lee. Question number 6, who is considered to be the first programmer? The answer is Ada Lovelace. Question number 7, when was the first email sent? The answer is 1971. Question number 8, where is the BIOS stored? BIOS stored on the flash memory chip. Question number 9, who was one of the original founder of Intel Corporation? The original founder of the Intel Corporation, Jordan E. Moore. And next question is, who created the first mouse in 1963? Douglas Engelbart created the first mouse in 1963. Question number 11, how many bits in a byte? There are 8 bits in a byte. And question number 12, computer calculate numbers in what mode? Wow, the binary mode. Next question, what is the white book? Specification for VCD and photo CD is the answer. Which country's people used more internets? The answer is China. And question number 15, name of the great Muslim scientist who was considered as one of the founders of computers? The answer is Al-Khwarizmi. And question number 16, who found the term cyberspace? William Gibson found the term cyberspace. Next question, what is the meaning of fetch? Fetch means to retrieve data or instructions from storage. And next question is, who sent the first email? Ray Tomlinson sent first email in 1971. And question number 19, who is the founding father of Yahoo? The answer is Jerry Yang and David Filo. And today's last question, which is the world's largest web-based email service with 369 million members? The answer is Windows Live Hotmail.
and don't go anywhere. Time of the question of the day. So listen carefully. Which country's people used more internet? Question of the day. I'm going to repeat for you. Which country's people used more internet? Kindly leave your answer in comments. And in last, but not for the least, please don't forget to like this video. You have to subscribe our channel because it's our request. Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our channel and click the bell icon button to get latest update from us. Thank you so much. Assalamu alaikum.